Hello my lovely traders, I hope you all are doing well. Now today is very important announcement with me for all of you guys, and I'll shortly tell you about it. Now first let's discuss about what happened on Friday's trading session. I wrote in the pre-market blog as well as we discussed in the Thursday's night analysis video that the results of SBI can actually shake up the bulls, and if the bulls wake up, we might see another bull run in Bank Nifty and taking Nifty higher with it. Exactly वही हुआ. SBI के results बहुत अच्छे आए and somehow SBI managed to actually wake up the bulls. There was a stellar bull run और देखने वाली बात ये भी थी कि results SBI कितने अच्छे आए थे, but top performing banking stock था HDFC. So what can you say? Markets being markets, you cannot expect anything particular from the markets. Markets are unpredictable. What you have to do is you have to learn how to ride the trend. So what I keep telling every trader, what I keep telling in every single video is a very simple thing. अगर आपने अभी तक मेरा previous video नहीं देखा है जो कि आज ही post किया है, जिसमें हमने बात करा है कि why should you actually stop trading, आपको trading क्यों बंद कर देनी चाहिए. We have discussed a lot of important things in that video. If you have not watched it, you just go out there and watch it, because that is actually an eye-opener video for every single trader out there who is coming into the markets and continuously losing money. So that's a very eye-opener video, and we did discuss this one fact in that video, that how to actually make sure that you control your emotions of fear and greed, and how to actually make sure that you make money from the markets and end your months in green. Green is good, my friend. I keep telling that green is good. Small green or big green, but you have to be in green. That's the primary motto of coming into the markets, right? You are not into the markets to actually lose money. You are not into markets to actually throw away the money. कैसे आदमी या कैसे ट्रेडर मार्केट में आके पैसा हारता है? There's a very simple definition to it if I'll tell you. Now listen to it very carefully. Basically in the market, stock market is nothing but a transaction of money between a systematic transaction of money, a systematic transfer of money between an indisciplined trader to a disciplined trader. Listen to it, listen to me again and listen very carefully. Stock market is nothing but a systematic transfer of money from an indisciplined trader to a disciplined trader. So now the question is कि क्या आप एक disciplined trader हैं? क्या आप अपनी strategy बना के रखे हैं? क्या आप उस strategy पे stick रहते हैं? क्या आप अपने stop loss, क्या आप अपने position sizing को follow करते हैं? Now you might have heard from a lot of people that stop loss, position sizing don't matter. Okay, might be it might not matter for some people, especially for people who are into hedging and adjustment trades, but it definitely matters to retailers who are into option buying. अगर आप ऑप्शन बाइंग के साथ ये सोच रख के आए हैं कि यार जितना भी कैपिटल है मैं लिमिटेड ही लूज कर सकता हूं ना, तो ठीक है, जितना भी होगा पूरे ही हार जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, 95% ऑफ द टाइम यू विल एक्चुअली लूज ऑल द कैपिटल. अगर आप ये सोच लेके आएंगे कि चलो ठीक है मैं 10,000 रुपए का कैपिटल तो लेके आया हूं, ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा, 10,000 का होगा, पर फायदा कितना होगा, कितना भी हो सकता है, बिकॉज इन ऑप्शन बाइंग देयर आर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, राइट? देयर आर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स. देयर माइट बी वन और टू डेज जहां पे आपको जबरदस्त प्रॉफिट आ गया, जबरदस्त फायदा हो गया. But what about the day when you lost all that 10,000 rupees? What now? You will be out of the markets. So in that case, the value of position sizing, the value of managing your risk to reward ratio, the value of maintaining a strategy is important. So basically the important announcement that I had for you is that the Millionaire Trader course is out now for anyone to join. If you are into the markets, it is better to come into the market with some learning. अगर आपको मार्केट में आके पैसा ही खर्च करना है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट इट्स बेटर टू कीप योर मनी इन बैंक एफडी और कीप योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स और कीप योर मनी इन स्मॉल केस एंड थिंग्स वेयर द मनी कैन एक्चुअली ग्रो इन लॉन्ग टर्म. बट इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योरसेल्फ एज एन इंट्राडे ट्रेडर, यू एक्चुअली शुड इन्वेस्ट सम मनी ऑन योर लर्निंग फर्स्ट. अपने आप के ऊपर पहले पैसा खर्च करिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप खर्च कर करके परेशान हो जाएंगे, फिर भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड. आई एम नॉट सेइंग अटेंड द मिलियनेयर ट्रेडर कोर्स. आई एम सेइंग जस्ट गो आउट देयर एंड अटेंड एनी गुड कोर्स, एनी गुड training program which actually teaches you from the basic to the a pro level, that how can you actually do good system trading into the markets. Okay, so that is what the special announcement was, and
Now in this video we are going to discuss and analyze everything that happened into the markets on Friday's trading session and the possibility of Monday's trading session into the markets. We'll discuss the levels of both Nifty and Bank Nifty. So stay tuned till the end of the video, my friend, because you are going to learn a lot. And don't forget to hit the subscribe button and the bell notification icon ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और इस चैनल को अपने ट्रेडर दोस्तों के बीच में, ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ पे अच्छी खासी लर्निंग रोज मिलती है। सो आई होप that you will continue to watch the video till the very end. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's begin. What was the title of my previous blog? Can you see it here? The title of my previous post-market report was very clear. The Bull Run Awards goes to SBI. So SBI did manage to wake up the bulls, and Bank Nifty was underperforming for a lot of time now. We have been discussing the fact कि Bank Nifty अच्छा perform नहीं कर रहा है, लगातार consolidate कर रहा है. Every time Bank Nifty went and touched the 34,000 level, वहाँ से instantly अच्छा खासा selling pressure आ जाता था. But this time this was not the case. Okay, we'll discuss on the charts as well. हम काफी समय से एक बड़े गैप की भी बात कर रहे थे, जो गैप फिल होना बाकी था. मैं आपको चार्ट पे ले जाके वो चीज दिखाऊंगा. फिलहाल हम पूरे डेटा को डिस्कस कर लेते हैं. So SBI did wake up the bulls, and most of the people we did discuss this fact also कि जिनने 15,000 पे मार्केट को शॉर्ट करके रखा है या पुट ऑप्शंस लेके बैठे हैं, I don't know what was the reason behind it, because the market was showing its strength, plus India is on वर्ज ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड केसेस, जहां पे 4, 4.5, 5 लाख केसेस तक आने लगे थे. अभी 2, 2.5, 3 लाख केसेस के अंदर कोरोना केसेस आ चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन ड्राइव और बेहतर हो ही रही है. The DRDO drug D2DG is also out in the markets from June 1. So these are all positive news. Plus the banking stocks have been declaring good results. So these are all the positive news. Plus the global cues are supporting the markets. So I don't know what was the reason behind people to sell so many put options on the Thursday's trading session, but on Friday I think everyone out there who sold the put options, who sold the call options, I'm sorry, I don't know what was the reason behind people selling so many call options on Thursday's trading session, but जिनने भी selling करी थी, they might have to actually went to run for their cover, and that added fuel to the fire on Friday's trading session in the Bank Nifty index. That's what I'm trying to say here. Okay, so Bank Nifty index opened the day at 33,748, and after consolidation for a while, 34,000 का जो resistance था, it was taken out furiously with the stellar results announced by SBI, and the Bank Nifty index closed the day at 34,606. That was up by 3.82%, 1,272 points, 1,000 points से ऊपर का up move. Amazing to see. Also an important thing to see here is that India VIX, again for I think for the second or the third time in this whole year, India VIX has closed close to 19. So that is again a very good thing to see, because low VIX basically shows that there is low fear into the markets, and this is adding fuel to the bulls. So this is a good thing to see here. SBI reported Q4 standalone profit at 6,450 crores. That was up by 80% year on year. So and another thing that was good with SBI was that 24 let me tell you, another good thing was the NPAs reported by the SBI. The NPAs went down to 1.5% from 1.81% last quarter. That's another good news if you talk in terms of books of SBI. SBI is reporting good profits, the NPAs are going down, so it had to happen, the bull run had to come. Okay, so this amazing SBI results set Bank Nifty on fire, and after 1:30 PM Bank Nifty और Nifty दोनों के ही हम ऊपर जाता हुआ देख सकते थे. And surprising here that HDFC was the top gainer, not SBI. So anyways, now अगर हम ध्यान से देखेंगे तो HDFC twins, only HDFC Bank and HDFC together pushed Nifty by 100 points. That is amazing to see. So we talk about Nifty opened the day at 15,000, a whole 100 point gap up, और वहां से नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी. निफ्टी को 15,000 से ऊपर की तरफ ही जर्नी थी, and it closed the day at 15,175. that was up by 269 points. Another stellar move in Nifty, fueled by the banking sector. And as per the news, the Indian government is under process of another stimulus package
for faster economic recovery, and that is another positive sentiment for the whole markets, for every sector. So that's one good thing. Post market hours, JSW Steel and Hindalco also came up with results, and again stellar profits given by both the stocks. So we might actually see these stocks with a gap up opening on Monday, and we might actually see the metal index again taking Nifty higher on Monday's trading session. So stock specific action can definitely be seen in the metal index. We can look after that also. Other than that, 15,000 was considered a good resistance, 15,000 level, but now I'll say that 15,000 will act as a good support, which was earlier a good resistance. So we can from here on expect Nifty to trade between 15,000 to 15,200, 300. I can say 15,300 can be the upside for a while, but yes, अगले trading session में 15,300 तक जाता हुआ देख सकते हैं. Before moving ahead to the charts, let me quickly show you this amazing course that we have already launched. Description में मैं इस course की link भी डाल दूंगा. You can go and check it out. I highly recommend you join this live course with me every Saturday and Sunday for next 1 month. We will be online with you, teaching you every single thing from basics to the pro strategies that you can use as an option buyer, especially into the markets, to make sure that you end up with a good, handsome profit every month. Okay, our objective at The Millionaire Trader course is to make sure कि आप losses minimize करना सीखें और profits बड़े करना सीखें. Now we'll be teaching deep 6 good strategies, and the best part about it is that you will get access to the TMT club, that is our Millionaire Trader club, for 3 months. 3 months free access to all the daily trade setups that are done by us, all the stocks for intraday and swing setups. We'll share them with you, and other than that, there will be every night alerts from our custom stock scanners that will include the PDL, PDH breakout stocks, that will include the NR7 breakout stocks. Every single thing will be included in that, and you'll also get access to 8 ebooks for every session. And if in case अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है, there's nothing to worry about, because ये क्लासेस आप 3 महीने तक लगातार अटेंड कर सकते हैं. लाइव क्लासेस, these are not recorded videos. You will be able to interact with me one-to-one basis live. Okay, so that is going to be another great thing. If you are interested, you can just check out the link in the description below. So let's move ahead to the charts. Let's look at the Nifty 50 charts. Before moving ahead, let's look at the FII DI activity that happened on the last trading session. We can see that FII bought for 510 crores on the last trading session, and if we talk about DIIs were also the net buyers. So 649.10 crores bought by the DII. So that is amazing to see, and this actually sums up the rally that came in the markets on Friday's trading session. Now we are looking at Nifty 50's chart on daily time frame. Daily time frame पे हमको clearly क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि बड़ा strong bullish momentum के साथ निफ्टी ने अपना close दिया है. देखो, whenever you see a bullish candle close, you can expect a good momentum upwards, and in this case actually the Nifty has not reached its all time high. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इससे this is the second highest closing since February, since 2021 actually, second highest closing I can say, because the highest closing I believe, yes, after February the highest closing I believe was I think this, and yes, second or third highest closing. So these are the only highest closings that I can see as of now. After March, this is the highest closing that Nifty has given. So the thing is, अभी आपका जो ऑल टाइम हाई है उसको अपन देख लेते हैं. यहाँ पे मैं सारे लेवल्स को एक बार वापस ले आता हूँ आपके लिए. ऑन डेली टाइम फ्रेम, if we can see very clearly, these are the levels. So what I can see as of now here very clearly is that Nifty has definitely given a bullish close on this point, but 15,248 and especially these all-time high of 15,406, 15,328, these are going to act as very good resistance. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट कुछ समय और कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज बहुत जबरदस्त एक अप मूव मार्केट के अंदर आ चुका है आफ्टर कंटिन्यूअस डाउनफॉल from past so many trading sessions. Let's see, the downfall was going on for very long. If you can see here, तकरीबन मार्च 15th मार्च के बाद से निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही गया है, एंड आफ्टर 19th ऑफ अप्रैल निफ्टी ने वापस ऊपर जाना चालू किया है. केम बैक अ लिटिल एंड देन इट अगेन वेंट अप, केम बैक अ लिटिल एंड इट again went up. So यहाँ पे हम देख सकते हैं the bull run, I think it's again starting. So but you have to actually be cautious while you trade into the index, because थोड़ा सा कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकता है. ठीक है, हम लेवल्स की बात कर लेते हैं.
यहां पे देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आया था। दिस वाज आवर सीपीआर जोन फॉर द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। सीपीआर के बारे में अगर आपने नहीं समझा अभी तक तो पहली बात तो आपके लिए फ्री मास्टर क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, और इन केस अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं सो इट विल ऑल बी कवर्ड इन द मिलेनियर ट्रेडर course, the live course, so you can attend the course over there also। तो कहां कितना ब्यूटीफुली निफ्टी ने सपोर्ट लिया है सीपीआर पे भी, +50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके निफ्टी वेंट अप, halted for a while and with the power of SBI results it again went up to touch the 15192 resistance very beautifully। ये रेजिस्टेंस पहले से मार्क था, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्सपेक्टेशन है बेसिकली ये देख लेते हैं। देखिए एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें, यहां पे हमको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी जाके क्लोज हुआ है 104 पॉइंट नीचे, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 104 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट देयर माइट बी सर्टेन पॉसिबिलिटी की एक हो सकता है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाए। अगर गैप डाउन भी नहीं मिलती है तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इन केस फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? 15192 is going to be your important resistance, then 15248 is going to be our next important resistance। इन दोनों रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। सपोर्ट कहां पे आएगा? बड़ा अच्छा सपोर्ट आएगा आपको 15131 पे, ठीक है। सपोर्ट 1 एंड बिग सपोर्ट एट 15046। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए यानी मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ये भी हम बैंक निफ्टी को अभी देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी वाज इवन मोर वीक एंड इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन सिंस February इट वाज गोइंग डाउन इन अ कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड। एंड 19 अप्रैल के बाद जो बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी वो वापस फ्लैट हो गई थी कहीं ना कहीं, और 17 मई के बाद जो रिकवरी आई है दैट इज प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग। सो वी कैन से दैट दिस वाज द पार्ट where the market was accumulating itself, the buyers were accumulating, and now we can see strong recovery over here। So I can say that market has safely resumed its uptrend, but अभी बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई अभी भी काफी दूर है। सो हमारे पास काफी स्कोप है बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे ट्रेड सेटअप्स लेने का। मैं हर बार बोलता हूं इट्स अ मैड एलिफेंट, पागल हाथी है, जब चलता है तो अच्छा खासा पैसा देके जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू ट्रेड इनटू इक्विटी यू हैव टू you can only trade when you can only make money when the market is going up, but if you are trading as an option buyer or as an option seller in general, if you are trading options you can make money whether the market goes up or whether the market goes down or even if it stays sideways। हम ये सारी strategies कोर्स में डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, सो लेवल्स को मैं वापस यहां पे चालू कर लेता हूं और देखते हैं। वाओ, सो मेनी लेवल्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। बहुत सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए इंडेक्स ने लास्ट जो है मोमेंटम दिया है। इतने सारे लेवल्स को ब्रेक करके एक सिंगल डे की क्लोजिंग 34606 के लेवल को टच करके आई है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड अहेड। ओके, सो इसको जानने के लिए हम स्विच कर लेते हैं अपने आप को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली सी, देखिए मैंने रेड सर्कल मेंबर्स के साथ ये ट्रेड शेयर किया था, लेवल्स शेयर करता हूं बेसिकली मैं, और रेड सर्कल मेंबरशिप इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड। इसके बाद सीधे TMT क्लब ही है जो कुछ रहेगा, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन हु विल बी पार्ट ऑफ द TMT कम्युनिटी विल गेट एक्सेस टू द TMT क्लब, जहां पे मैं लेवल्स रोज शेयर करूंगा, प्लस सभी स्टॉक्स भी रहा करेंगे जो कि आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड सेटअप फॉर द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, इट वाज अमेजिंग। हमारा टारगेट और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 था, बहुत ब्यूटीफुली ये पूरा टारगेट अचीव हुआ, उसके ऊपर भी मौका बना बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स को ट्रेल करने का। सो इट वाज एन अमेजिंग डे इनटू द बैंक निफ्टी इंडेक्स, वी बुक्ड वेरी गुड प्रॉफिट्स विद द मेंबर्स। इट्स अमेजिंग टू सी कि लर्निंग का कितना ज्यादा इफेक्ट आता है अर्निंग्स के ऊपर। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस क्विकली फॉर यू एंड देन वी विल मूव अहेड। 1 second। सो ओके, यस, now what can be the levels for next trading session for बैंक निफ्टी इंडेक्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको लेवल्स जो मिलेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं सो 34348, this would be your good support number 1। सपोर्ट नंबर 2 is this whole zone। ये पूरा जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि इतने कंसोलिडेशन के बाद यहां से जबरदस्त बाइंग आई है, ठीक है। तो ये जो जोन है 33972 से 34140, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो दिस इज योर सपोर्ट 2। ये दोनों सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस कहां रहेगा
देखिए अगर हल्की सी भी गैप अप ओपनिंग मिलती है ना, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस आएगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा 34, लेट मी जूम इट जस्ट अ बिट, स्विच इट टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, जो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 34,649 पे, अगर थोड़ी भी फ्लैट ओपनिंग रहती है तो। और अगला बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस 2 कह लेते हैं इसको, 34,944 पे। ठीक है, ये सब हमारे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस हैं। अगर बाय चांस 34,944 लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, your big resistance will come at 35,422. These are all the major resistance that we are talking about. अगर हम minor resistance की बात करना चाहें तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को 1 hour टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं और बीच में minor resistance को भी मार्क कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बाद इंडेक्स कहां होल्ड कर सकता है। So I can very clearly see that this level, okay, this level is going to be another important crucial resistance, और इसके बाद एक important resistance level बीच में भी आएगा, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं, ये एक important crucial resistance बीच में भी हो गया। अब ठीक है, अब हमारे पास levels और भी clearly marked है, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के वापस देख लेते हैं। ओके, now much better I think, yes, so we can see on 5 मिनट टाइम फ्रेम that 34,649 के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए वो 34,755 है और फिर 34,944 है। नाउ वी हैव ऑल द लेवल्स वेरी क्लियर, दीज आर योर रेजिस्टेंस एरियाज एंड दीज आर योर सपोर्ट एरियाज। ठीक है, दोनों जगह पे हमने पूरी बात कर ली है। आई थिंक आपको ये लेवल्स बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो गए होंगे। Before moving ahead, just quickly go on to the link in the description below, and I insist you to actually check out the course brochure. You are going to love a lot of things about the course, because as I keep saying that स्टॉक मार्केट में अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना है तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव सीखना होना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग, very soon you start to earn. Okay, so this is my very important message to you, that what is stock market? Stock market is basically systematic transfer of money from an indisciplined trader to a disciplined trader, and being a disciplined trader takes a lot of patience, takes a lot of learning, takes a lot of mindfulness, and I think you are going to enjoy the TMT course a lot. Okay, so I hope to see you on the next analysis video, and I hope that you will soon join me on the TMT club. Okay, so this is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. Don't forget to subscribe and share this video and hit the bell notification icon. Thank you for listening to me. You are watching Rolling Bulls, the stock market show.